से निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओं लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः। ओं उमामहेश्वराभ्यं नमः। ओं वाणीरण्यगर्भाभ्यं नमः। ओं सच्चिपुरन्दराभ्यं नमः। ओं मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओं इष्टदेवताभ्यो नमः। ओं कुलदेवताभ्यो नमः। ओं ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओं स्थानदेवताभ्यो नमः। ओं वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओं सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। ओं सर्वेभ्यो आचार्यभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओं गणगणपतये नमः। इति स्वस्ति वचनम्। हाँ बहुत न गणपति ध्यानम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो दिव्ये महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमो प्रकृतिभद्रायै नियतामृतां सदां भगवते श्रीगणपतये नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि आसनार्थ अक्षतानि समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि गणपतये नमः। स्नानम् ओं भाद्रपाद्यं समर्पयामि हस्तवर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि। ओं गणपतये नमः। मिलितोपचार पंचामृत स्नानम् ओं पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसा सरस्वती तु पंचदासो देशे भवसरेत। पंचामृतमया नीतं पयोदधि घृतं मधु शर्करासमायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओं गणपतये नमः। शुद्धोदकस्नानं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालमणिबालस्तस्मिन् शेताः शेताक्षौरुणस्ते रुद्राय वस्वतये कर्णाज्यामावलिप्ता रौद्र नमो रूपाः पार्जन्याः गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां गणपतये नमः। आसनं समर्पयामि दुर्वांकुरान् पुष्पेण सुगंधिं तैलम् ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् वृत्तोर्मुक्षीयमामृतान् सुगंधिं तैलं समर्पयामि भगवते गणपतये नमः। वस्त्रम् यज्ञोपवीतं परमं पवीतं प्रजापत्रयः सहजं पुरस्तात् आयुष्समग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। वस्त्रं जुवासुवासा परिवीतागा सौश्रेयान् भवति जायमानतं धीरास्कवयोन्नयन्ति साध्यो मनसा देवयन्त। वस्त्रोपवस्त्राणि समर्पयामि रक्तसूत्रखण्डद्वयं समर्पयामि चन्दनानुलेपनम्। ओं त्वां गन्धर्वाखनोस्तमिन्द्रस्ता बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमराज विद्वान् क्ष्मादमुच्चत्त। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठां चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओं गणपतये नमः। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि कुङ्कुमं समर्पयामि गन्धद्वारां दुर्दासां नित्यपुष्टां करेषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तां यो भवै श्रियम्। गणपतये नमः। अक्षतान् समर्पयामि अक्षन्यमिव दन्ति जपप्रिया दुःखदस्तोखदस्वाभानभविप्राणविष्टया मतिजोजान्विन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि अक्षतान्ते भगवते श्रीगणपतये नमः। नाममन्त्रद्वारा अर्चनम्। ओं श्री सुमुखाय नमः। ओं एकदन्ताय नमः। ओं कपिलाय नमः। ओं गजकर्णकाय नमः।
ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्ननाशाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ धूम्रकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ भालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ गङ्गणपतये नमः धूपमाग्रापयामि ॐ धूरस्य धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं ज्योत्स्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वामः देवानामस्य वनितमगुं सस्नितमं ववृतमं जुष्टतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातक्षजोः सूर्यजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत भगवते गङ्गणपतये नमः अग्नये नमः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि भगवते श्रीगङ्गणपतये नमः आचमनीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यमवापि पुष्पाणि समर्पयामि ओं नाभ्यासिदन्तरिक्षगुं शेष्णोर्द्यौः संवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रान् तथा लोकामकल्पयन् ॐ जाः फलिनिर्जाफला पुष्पायाश्च पुष्पिणि बृहस्पतिप्रसदास्तानुमुञ्चन्तगुं हसः ऋतुफलानि समर्पयामि भगवते गङ्गणपतये नमः पुङ्गिफलं समर्पयामि यत्पुरुषेण विखादेवाय नमः तन्वतपसन्तोषासिराजं गृह्मैत्मा शरद्वभिः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकासिदसदाधारप्रतिविद्यां ते मां कस्मै देवाय विखाविदेमः भगवते श्रीगङ्गणपतये नमः कर्पूरार्तिकं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ गङ्गणपतये नमः कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनं विशेषप्रार्थनाम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्ट्वभागं सस्तनुर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानमशिष्यम् अवपश्चातात् अवव्रस्तात् अवुत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्धातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तजायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयैलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुं त्वं रुद्रस्तमिन्द्रस्तमग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वरः परतरः अर्धेन्दुलसितां तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपां गकारपूर्वं रूपाम् अकारो मध्यमरूपाम् अनुस्वारस्तान्त्यरूपां बिन्दुरुत्तररूपां नादसन्धानं सहिता सन्धिः सहिता गणेशविद्यः गणकरिषि नित्यगायत्रिछन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशमधारिणं रदं च वरदं हस्त्रैर्बिभ्राणं शकध्वजां
रक्तं लम्बोदरं सर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितां भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युताम् आविर्भूतं सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् पराम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वराः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय कदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतनं भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धां सतां कुलजनां प्रभवत्सलज्जा तां त्वं नता स्मरिपालय देवी विश्वां भगवते श्रीगौरीगणेशाय नमः इति विशेषध्यानं प्रार्थनाम् अनेन पूजनेन श्रीगणपतिदेवता प्रियन्तां न मम। बोलिए गणपति भगवान की जय। अथ वरुण देवता पूजनम् ओं वर्णस्योदं मनमसि वर्णसस्कं सर्जनिस्तो वर्णसरितसदन्यसि वर्णसरितसदनमसि वर्णसरितसदनमासीत् ओं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रिता मूले स्तुस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी अर्जुनी गोमती चैव चन्द्रभागा सरस्वती ऋग्वेदोऽथयजुर्वेद सामवेदोऽथर्वण अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओं भाद्रपाद्यं समर्पयामि हस्तुर्घ्यं समर्पयामि मुख्याचमनीं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गस्नानं जलं समर्पयामि भगवते वरुणाय नमः। ओं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोदशा सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवसरेत मिलितोपचार पञ्चामृतस्नानं पुनः शुद्धोदकस्नानं गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां वरुणाय पाम्पतये नमः। वस्त्रम् उपवस्त्रं यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओं ब्रह्माजज्ञानं प्रथमं वृषदादिशिमतः सुरुचो वेनावः सुबुज्ञा उपमास्य विष्टाः सतस्त्वनिमसतस्त्वैवः भगवते श्री वरुणाय अपाम्पतये नमः। चन्दनानुलेपनम् ओं त्वाङ्गन्धर्वाखनौस्तामिन्द्रस्ता बृहस्पतिः त्वामोखदिशो मुराज विद्वानक्ष्मादमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गञ्जाड्यं सुमनोहरं विलेपनं श्राश्रेष्ठां चन्दनं प्रतिगृह्यतां वरुणाय अपाम्पतये नमः। अक्षतान् अक्षण्यमिव दन्त्य जवप्रिया दुःखतस्थो खतस्वाभानवविप्रान्विष्टयामति जोजान्मिन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पं बिल्मपत्रं दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। ओं नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नाम मंत्रद्वारा अर्चनम्। ओं वरुणाय नमः ओं प्रचेतसे नमः ओं स्वरूपिणे नमः ओं अपाम्पतये नमः ओं मकरवाहनाय नमः ओं जलाधिपतये नमः ओं पाशस्ताय नमः ओं अनकर्मणिभूषणाय नमः ओं वरुणाय नमः ओं नानाविधपरिमलपुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय अपाम्पतये नमः। धूपमाग्रपयामि धूरस्य धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं ज्योत्स्मान् धुर्वतितं धुर्वजं वयं धुर्वामः देवानामसि वन्यतमगुंसस्नितमं वप्रीतमं देवहूतमं धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जातक्षजोः सृजजायत स्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत भगवते वरुणाय पाम्पतये सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। नैवेद्यम् अवावे पुष्पाणि समर्पयामि नाभ्यासिदन्तरिक्षगुंसिष्णुर्देवः संवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रान्दधालोकामकल्पयन् याः फलिनिर्जफला पुष्पयाश्च पुष्पिणी बृहस्पतिप्रसुतास्तानमुञ्चन्त गुंहसः ऋतुफलानि समर्पयामि। ताम्बूलानि समर्पयामि यत्पुरुषेण विखादेवाजनवतन्वत वसन्तो शासिराज्यं गृह्मैद्मः शरद्वभिः द्रवदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासिद सदाधार प्रतिविद्यां ते मां कस्मै देवाय विखाविदेमः द्रवदक्षिणां समर्पयामि।
कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि वं वरुणाय पाम्पतये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वं वरुणाय पाम्पतये नमः। कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि। नमस्करोमि नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते वं वरुणाय पाम्पतये नमः। अनेन पूजनेन श्रीवरुणदेवता प्रियन्तां नमः। बोलिए वरुणदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। सीताराम। पद्मासीनं समन्तास्तमर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, आसनार्थे अक्षतानि समर्पयामि, आवाहयामि स्थापयामि। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। नंदीश्वराय नमः। सपरिकराय नमः। स्नानम् ओं पादरूपाढ्यं समर्पयामि, हस्तोर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीं जलं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय। ओम आशु शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः शोभनस्तरेखणिनाम संक्रन्दनो निमिष एकवीरः शतकुंसेन अजाय सकमिन्द्रः। भगवते श्रीनन्दीश्वराय नमः। प्रथम पय स्नानम् ओं पयः पृथिव्यां पय ओखदिखुपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदाः पयसदिः प्रदिशः सन्तु मह्यम् कामधेनु समुद्भूतां सर्वेषां जीवनं परं पावनं हेतुश्च पयस्नानार्थमर्पितां पयस्नानं समर्पयामि, दधिस्नानं समर्पयामि। ओं दधिक्रां लोकारिकं विष्णुरसुशिवाजिनः सुरा
मुखाकरत्प्रणाय गोङ्खितारिखत्त दधिस्नानं समर्पयामि घृतस्नानं घृतं मिमिक्षे घृतमसजो निघृते श्रुतो घृतमसदामनुसदमावः मादसस्वाः कृतं ऋखवः वक्ष्यभ्यं घृतस्नानं समर्पयामि मधुस्नानम् ॐ मधुबातारिताय मधुक्षरन्ति सिन्धवमाधुरिणः सन्तोषदेहि मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवघुङ्रजः मधुदेवरास्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यमाभिर्गावो भवन्तु नः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शर्करास्नानम् ओम अपागुं रसमुद्भय सगुं सूर्य संतगुं समाहितम् अपागुं रससजो रसस्तंभो गृह्णामूतममुपयाम गृहीतो सिन्द्रायतं जुष्टां गृह्णामेखते ज्योनिरिन्द्रायतं दुष्टदमम् मिलितपचार पंचामृत स्नानं पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदा सोदेशे भवस्सरिद पंचामृतमया नीतं पयोदधि घृतं मधु शर्करासमायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् नारिकेलजलं समर्पयामि ओम श्रीश्वरे लक्ष्मीस्पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्याप्तं अष्टान्यखाणा मुम्बईखाणा सर्वलोकं मयिखाणा भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः नारिकेलजलं समर्पयामि मिष्टान्नजलम् ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः मिष्टान्नजलं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तस्मिन् श्वेताः श्वेताक्षरुणस्ते रुद्राय वस्पतये कर्णाज्ञामावलिप्तारो द्रनमोरुपाः पार्जन्यः ओम नमः शिवाय। ईशवे नमः नमस्ते अस्तु धन्मने बाहुभ्यामुतते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृदयं याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्तेर्बिभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसीः पुरुषं जगतम् याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्तिर्बिभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसीः पुरुषं जगतं शिवेन वचसा त्वा गिरिशा चावधामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं समना असतम् अध्यवोचदधिवक्तां प्रथमो देव्योऽभिषक अहीगश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वा आश्च यातु धान्यहम् असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुसु मङ्गलः ये चेमागुं रुद्र अभितो दिक्षु श्रुताः सहस्रशो वैशागुं हेद ईमहे असो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोप अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृदयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयोराट्नियोर्ज्यां यास्यते हस्त इषवः पराता भगवो वपम् अवतत्यधुनस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशील्यशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भवम् विद्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अणेशन्नस्येषव आभुरस्य निसङ्गतिः याते हेतिर्मेढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तम यक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातथाय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मा वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितं शम्भवे नमः ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः
नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्वशीमते पथीनां पतये नमो नमो पभ्रुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये पारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निशङ्किने स्थेनानां पतये नमो नमो निशङ्किन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाव्यभ्यो जिघ्घागुंसभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीशने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाभिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छभ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्येभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिने एभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगनाभ्यस्तगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्राते एभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथे एभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यस्सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारे एभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जेष्टे एभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यस्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्णमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो च घन्याय च बुद्धियाय च नमः सौभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वव्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिस्रवाय च नमः आशुसेनाय चासुरथाय च नमः शूराय चापभिन्नते च नमो वर्मिने च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दन्दोभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निशङ्गिने चेचुधिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो
अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शस्प्याय च धेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवार्याय च नमः हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः काट्याय च गह्वरिष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सोम्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णसद्याय च नमो पगुरमानाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमेवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणामेषां पशूनामाभेर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृद्जीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मथिं यथा नः समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् नातुरं मृदानो रुद्रोतनो मयस्कधीक्षयद्वीराय नमसा विधीमते यच्छञ्चयोश्च मरुराय जे पिता ततस्यामतव रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानो उक्षितं मानोवधीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तुनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तो केतनये मान आयशि मानो गोषो मानो अश्वेश्वरीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधीमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सं नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यता च नः शर्म यच्च दिवर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रं मृदा च रित्रे रुद्रस्तवान्यो अन्यन्ते अस्मिन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्विनक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामगवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकायतनयाय मृदयं मीढुष्टमशिवतमा शिवो नः समना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं बिभ्रतागहिं विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मिन्निपपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे एन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठा सर्वा अतः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपसृताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्चरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विपतो जनान् ये पथां पथि रक्षय एलभृदाय व्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्लिकावन्तो निषङ्गिनः ययेतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावतस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृदयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भी दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुः यस्विषुषु धन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा आमहेसो ॐ मनसाय रुद्रं नमो ओभेन् देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे एषजो यगं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि
प्राणानां ग्रन्थिरसे रुद्रोमा विशान्तकः तेनान्नेना आप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवोम् ओम शांति 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 हरि ओम ओम निधनपतये नमः निधनपतान्तकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिंगाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिंगाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिंगाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिंगाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिंगाय नमः भवाय नमः भवलिंगाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिंगाय नमः शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः भवाय नमः भवलिंगाय नमः आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः परमाय नमः परमलिंगाय नमः एतत्सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिंगस्थापयति पानिमन्त्रं पवित्रं सद्यो जातं पपद्यामि सत्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवेन्नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरे एभ्योऽथ घोरे एभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वे एभ्यः सर्वे एभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकाय पतय उमापतये पशुपतये नमो नमः नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर परमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्दवृंद सूर्याय दक्षाध्वर्णाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यपठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यमहाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्या वैद्यनाथं च दाकिन्यं भीमशङ्करम् सेतुबन्धेन्तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये च केदारं घुष्मेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातपठेन्नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्याप्सरसां गणा नरा नमन्ति देवेश नकराय नमो नमः महादेव महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापहरं देवं मकराय नमो नमः
शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः वाहनं वृषभो यस्य वासुकीकण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वर यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः षडक्षरमिदं स्तोत्रं य पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। अथ श्री शिवमानसपूजा रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्मपत्ररचितां पुष्पं च धूपं तथा दीपां देवदयानिधे पशुपतेरित्कल्पितां गृहतां सौवर्णे मणिखण्डरत्नरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यां पञ्चविधं पयोदधियुतां रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितां भक्ता प्रभो स्वीकुरु छत्रां चामरयोर्युगं व्यजनकां चादरसकां निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा शास्त्राङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधे स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तमखिलां सम्भोतवारार्धनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितमविदिहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो चन्द्रोर्भासितशेखरे स्मर हरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्परिभूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्ते त्वत्कृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं गुरुचित्तवृत्तमचला मन्यस्तु किं कर्मभिः किं वा नेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किं ज्ञात्वेतक्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरता स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वती वल्लभाम् आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायन्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षका लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितां तस्मान्मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। ॐ महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे मृत्युञ्जय वृषभध्वज शूलिन गङ्गाधर मृडमदनारे हर शिव शङ्कर गौरीशं गङ्गे गङ्गाधरमीशं शिवरुद्रं पशुपतिमीशानं
कलये काशीपुरीनाथं जय शम्भो शिव गौरी शंकर जय शम्भो शिव गौरी शंकर जय शम्भो शिव गौरी शंकर जय शम्भो नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शम्भो। अथ श्री शिवमहिम्न स्तोत्रम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीपुष्पदन्तुवाच महीम्ना पारं ते परमविदुषो यद्रसदिशे स्तुति ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा अथा वाच सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णान् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादपरिकर अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोरतव्यावृत्यायं चकितमविधत्ते श्रुतिरपि सकसस्तोतव्या कतिविधगुणाकस्य विषय पदेतुर्वाचिने पतति न मनः कस्य न वच मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरुर्विस्मयपदं मम ते तां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबोधिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत्रये वस्तो व्यास्तं त्रिशिषु गुणाभिन्नासु तनुषु अभाव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधिया किमिह किं काय सकलु किमुपाय स्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वयनवसरदुस्तो हतधियं कुतर्कोऽयं काञ्चिन् मुखरयति मोहाय जगत अजन्मानो लोका किमभयभवन्तोऽपि जगता मदिष्टातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कपरिकरो यतो मन्दास्त्वं प्रत्यमरवरसंसेरत इमे त्रयी सांख्यं योगा पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपाठ्यमिति च रुचीनां वैचेन्द्राद्रिजुकुटिलनानापदजुषां दृढामेको गम्यस्त्वमसि पयसा वर्णवैव अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैराव्यतिकरं दशासो यद्बाहो न वृतरणकण्डोपरवसान् शिरापद्मश्रेणीरचितचरणाम्बोरुहबले स्थिराय स्त्वत्भक्तेस्त्रिभुवन
हरभिस्फुर्जितमिदम् अमुष्यत्वसेवा समधिगतसाराम्बुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयत अलभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वयासे ध्रुवमुपचितो मयतिखलम् यद्रेदं सुतराम्णो वरद परमोचैरपि सति मदश्चक्रे बाणपरिजनविधेयस्त्रिभुवनम् न तचित्रं तस्मिन् वरिवसितरे त्वचरणयोर्न कस्याप्युन्नते भवति शिरसत्यै अभवति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयसा सेद्यस्त्रिनयन विसंसंवृतवत सकल्मासकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनम् असेदार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपस्यानि सत्त्वामितश्रमसुरणसाधारणमभूत् स्मर स्मरतव्यात्मानैव शिशुपथ्य परिभवम् महीपादागात्वा व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णुर्ब्राह्म्याद्भुजपरिगरुणाग्रहगणं मुहुर्दोदस्तं यादनिवृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वां नटसि ननु मामैव विभूता वियाद्यापितारा गणगुणितफेनोद्गमरुचि प्रवाहो वारां यपृषतलघुदृष्टशिरसिते जगदेपाकारं जलधिबलयं तेन कृतमित्यनैनैवन्येयं धृतमहिमदिव्यं तव वपु रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणि सर इति दिदाक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयै क्रीडन्तो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिया हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमादाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्तुद्रेकपरिणतिमशोचक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागरति जगताम् क्रतोऽसोप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतं कुकर्मा प्राद्धस्तां फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वं सम्प्रेक्ष क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धा बद्ध्वा दृढपरिकर कर्मसु जना क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरदेशस्तनुभृतां वृषेणामार्वेज्यं शरणदशदस्यासुरगणां क्रतु व्रंसस्तत्तो क्रतुफलविधानभ्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विदुरमविचाराय हि मखा
प्रजानाथं नाथ प्रसवमविकं सां दुहितरं गतं रोहिद्भूताम्रिरमये सुमृषसवपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेज्यापि त्यजति न मृगाव्यादरभसा स्वलावण्या संसात्रितधनुषमण्डहाय तृणवत् पुरप्लुष्टं दृष्टा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणां देवीयमनिरतदेहार्धघटनादवैति त्वामद्वावत वरदमुग्धायुवतया श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहरपि सा च सहचरा स्थिता भस्मालेप स्रगपि नृगरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्त्रीणां वरद परमं मङ्गलमसे मनः प्रत्यक्षिते सविदमवदायतमरुतं प्ररीशद्रोमाण प्रमदसलिलसङ्गीतदृश यदा लोक्यालदं हृदयमनिमज्जामृतमये ददन्त्यन्त्वस्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्तं सोमस्त्वमसि पवनस्तमुतवः त्वमापस्त्वं व्योमा त्वमुदरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं तयि परिणता विव्रतु गिरं न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसे त्रयीं तिस्रवृत्रिस्त्रिभुवनमथ त्रीनपि सुरान् अकाराद्यरिवर्णैस्त्रिभिरभिदधात्रिर्न विकृते तुरीयं ते दामोदनिभिर्वरुन्दानमणुभिः समस्तं व्यास्तां त्वां शरणदगृणातोमिति पदम् भवसर्वरुद्र पशुपतिरथोग्रसः महस्तथा भीमेशाना यदि विदनाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमसोऽस्मि भवते नमो निर्दिष्टाय प्रियतमवदिष्टाय च नमो नमः चोदिष्टाय स्मरहरमहिष्टाय च नमः नमो वरसिष्ठाय त्रिनयनयविष्टाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्त्यो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सक्तौ दृक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः कृशवर्णति चेत क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वचदवगुणसेमोल्लङ्घिनी सा स्ववृद्धि इति चकितममन्दे कृत्य मां भक्तिरादात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्शाखा लेखनी पत्रमुर्वि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्सन्दुमौलैर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्य स्वरस्य सकलगुणवरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्ते स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यं
सभवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तदात्र प्रचुरतरतनायो पुत्रवान् कीर्तिमांस महेशान्न परो देवो महिम्नो नापरास्तुते अघोरान्न परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परं दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यज्ञदिका क्रिया मैनं स्तवपाठस्य कल्हां नारन्दी षोडशीं कुसुमदशन नाम सर्वगन्धर्वराज शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दास स खलु निजमहिम्नो भ्रष्टे वासरोषास्तवनमिदमकार्षेत् दिव्यं महिम्नं सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्यचेता व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानस्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तः प्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं सर्वमीश्वरवर्णनम् अनौपम्य मनोहारी पुण्यं गन्धर्वभासिताम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदा शिवा तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं पठे नित्यं वा त्रिकालं य पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते बोलिए शंकर भगवान की जय।
शिव शिव ओम धम 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 रूप जय शिव हर हर शिव शिव हर हर शिव शिव धम 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 रूप जय शिव त्रिशूलधारी गंगाधारी त्रिशूलधारी गंगाधारी हर हर शिव शिव ओम हर हर शिव शिव ओम हर हर शिव शिव ओम धम 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 रूप जय शिव शंभु शंकर हे अभयंकर शंभु शंकर हे अभयंकर हर हर शिव शिव ओम हर हर शिव शिव ओम हर हर शिव शिव ओम धम 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 रूप जय शिव हर हर शिव शिव ओम धम 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 रूप जय शिव हर हर शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर शिव शिव ओम जय 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 बजरंगबली जय 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 बजरंगबली मारुति नंदन महाबली मारुति नंदन महाबली जय 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 बजरंगबली जय 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 बजरंगबली पवन पुत्र का नाम जाया संकट नाही होवे वहाया पवन पुत्र का नाम जाया संकट नाही होवे वहाया हनुमान जी करे बली हनुमान जी करे बली जय 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 बजरंगबली जय 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 बजरंगबली जय 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 बजरंगबली मारुति नंदन महाबली मारुति नंदन महाबली जय 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 बजरंगबली जय 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 बजरंगबली जय 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 बजरंगबली मंगल मूर्ति राम दुलारे आन पराय
बोले महापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले प्लीज नमः शिवाय ओम हर
भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय योगेश्वरा शिव योगेश्वरा 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोले भवानी शंकर भगवान की, अन्नपूर्ण पार्वती माता की, नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। बोले पवन सुत हनुमान की, बजरंगबली भगवान की जय। प्लीज बी सीटेड एवरीबॉडी। We'll have one bhajan and then I'll start satsang. हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, हे पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, हे पवन सुत बिनती बारंबार। सिद्धि नव निधि के दाता, हर्ष सिद्धि नव निधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। मेरा कर उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, हे पवन सुत बिनती बारंबार। अपरंपार शक्ति तुम्हारी, अपरंपार शक्ति तुम्हारी। तुम पर विजय अवध बिहारी, तुम पर विजय अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्यान उतो है, भक्ति भाव से ध्यान उतो है। कर दुखों से पार, पवन सुत बिनती बारंबार, हे पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, हे पवन सुत बिनती बारंबार, हे पवन सुत बिनती बारंबार।
बोले पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीत नीरज सुंदरम पद पीतमान हो चरित रुचि सुन नामे जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निरंजनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सिर मुकुट कुंदन तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। श्री राम
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय रंजन वास गुरु कामादि घन धर रंजन श्री राम श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम बोले पवन सुत हनुमान की सिया भज रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हारहु कलेश विकार। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी है। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी हो। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिनु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ भस्म और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत संभाए सहस बदन तुम्हरो यश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु वीर अवतार मधुर पर जानु। प्रभु मुद्रिका मेहि मुख माही जल्दी लाग गए अचरज लाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे भूत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हाथ के काटे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा। जब निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो दावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे।
तुम्हारा, हे परसिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहारे, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बोलो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, जो दैवन्य महासुख होई, जो यहाँ पर हनुमान चालीसा, होई सीधी साथी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महादेवा, की जय नाथ हृदय महादेरा, की जय नाथ हृदय महादेवा। पावन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहु सुरभूप सिया, भर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम हम हनुमते नमः। बोले बजरंगबली भगवान की जय। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। To Hanuman ji we bow this evening. Welcome to everyone online and in the temple to Bhavani Shankar Mandir in our Shraavan Mass celebration. We are still in the month of Shraavan, going on to the last 2 weeks of Shraavan, and we are still in Purushottam Mass, which is the extra month in the Hindu calendar. It's a blessing to see all of you, children, grown-ups, all of you online. This evening we have the darshan of Bhagwan Hanumanji being Saturday. Saturday is associated with Hanumanji Maharaj, and Saturday is associated with Lord Shani Dev as well. And so why is this association with Lord Hanumanji and Shani? Kayanas-chitra abhuva duti sada vridha kaya sachistaya rangrahave namaham. In the Navgraha Suktam, Shanno Devi Rabhishtaya Apo Bhavantu Pitaye. Once Shani, the Graha, all of you know the Grahas? You must take a little walk there and visit all the Grahas. They are the Grahas are we call them planets in common name, but one of them by the name of Shani, he has his own way of rewarding people for the not so nice things that they did in life. All of them have a purpose, right? Some of them reward you for the good things in life, some of them reward you for the not so nice things in life. When you hear you have Shani Graha, the Panditji in astrology, someone who's qualified to tell you this, when you hear that you have Shani Graha, it takes a minimum of 14 and a half years for a Shani Graha to go away from you. So if the intent is for you to do a little puja to get rid of Shani Graha, somebody tells you that, that's not right. It takes minimum 14 years. So it's like living with a long-term sickness, right? A long-term disease. How do you live with it? Medically, you have to take certain medications, go through certain procedures, adjust your lifestyle, right? What you eat, where you go, how much you sleep. Let us say you have a long-term, or a sickness or a disease, something that come upon you that requires long-term caring. You have to adjust a lot of things. You have to adjust how much time you sleep, what you eat, how you exercise. The whole work you have to go through and change your entire lifestyle to accommodate your illness.
Similarly, when we have chosen a spiritual life, spiritual means beyond the physical. At times we tend to associate religious and spiritual together. Religious triggers spiritual. Religious is the root of spirituality. So don't disregard religion and religiousness. It is the root of spirituality. But when we talk about spiritual, it means beyond the physical offering, beyond the physical abhishekam. It means you can do manas puja, Shivji manas puja, using your mind. Ratne kalapitamasanam himajalay snanam chadivyambaram. You can sit like this and use the imagination and your power of your mind, himajalay, to bring water from the Himalaya. Snanam chadivyambaram, and you can take that water by closing your eyes and your mind and pour it on Shiva. Nana ratna vibhushitam mrigamada modam kicham chandanam. From your meditation, just by closing your eyes, you can place chandan on the Lord. Jati champaka bilva patra rachitam. You can put a bilpatra by imagining it. Pushpam jadupam dadha. You can offer fruits to the Lord as well. That level is called a spiritual level, where it is beyond the material, and now you've gone into a different realm. The yogis do this because they have lived a material life enough to evolve into a spiritual life. Spirituality is important in life because when the physical body gives up, the spiritual engine kicks in. Our community, today the West is going to India, Rishikesh especially, and they are learning about meditation and yoga, and they are bringing that back to us. They are teaching us meditation, how to close the eyes, how to access the Muladhara, and this is our ancient teachings, right? So, going back to Lord Shani, when you have a Shani Graha, it is like a long-term change of your lifestyle. When you want to live a spiritual life, it means change of association. Who you associate with, what you associate with, where do you go, where do you not go, what you eat, what you drink, the whole works. And then when all those changes are made, just like you are making changes to accommodate your health, you're also making changes to accommodate your spiritual life. Spiritual life, or a religious life as well, is not a one-off thing. It's not like a spare wheel where, we have a particular incident in our life and we must do a puja for that. By the way, let me tell you, there is a puja for everything. Aditya, there's a puja for everything. There's a puja for sleep. There's a puja for not to sleep. There's a puja to eat. There's a puja to not eat. I can't teach you that one though. You know that? There's a puja for everything. Because in every part of our body, there is a deity residing. Remember when Krishna Bhagavan, when Putana in the Bhagavatam, when Putana had stolen the Lord, and the Lord sucked the poison out of her breast, and she fell to the earth, Mother Yashoda took Krishna and took him to the cow pen, and they started to touch different part of the body. Om Achyutaya Nama, Anantaya Nama, Janardhanaya Nama, Madhusudanaya Nama, and so on. Because every part of our body, there is a God. Every part of our body. And the abdomen, guess which God is residing there? The stomach, digestion, which God is residing there? When your stomach is burning like fire, which God is residing there? Like fire. Which God is residing there? Agni. Jatharagni. That's a different Agni. In the stomach, when you're hungry, that is called Jatharagni. He is the God fire that burns to digest the food. It means he is activated. And the Brahmanas, after doing long puja, they do so much havan and havan and havan,
after all the fire, the Panditji will say, Acha, Jatharagni is ready now. It means pet. Panditji, he and I have a joke. I tell Panditji, Panditji, you come here, you happy, everything okay, we give you no problem, we make you happy. But Panditji, all I ask is pet your belly, keep belly down. I told him, I said, Panditji, keep belly down. He says, yes, Panditji. He says, two problems, Panditji. Panditji ka pet means a belly. Panditji ka pet or mandir ka gate. He says, if Panditji ka pet gets big, it means mandir ka gate has to be more bigger too, because Pandit can't pass through. So he rhymed, Panditji ka pet or mandir ka gate. So I begged Panditji, no, if big belly is not good for men. Hey, no big belly, flat belly, keep it down. Okay? Flat belly, always. Okay? So I know it's a tradition for you to walk and see a man having a big, and they're very proud of it. It's not good. Longer the waistline, shorter the lifeline. Okay? Not good. So it's a Saturday evening, so you guys are here, I'll talk to you. So you have to adjust yourself now to become a spiritual or a religious person. How are you going to do that? You change a lot of things in the way you do it. Now Hanumanji can help, because one day Hanumanji saw a fight between Raavan and Shani. And Raavan took his sword and he chopped the foot of Shani, and he was going to chop the head of Shani now. And Hanumanji came in and saved Shani. And from that day when he saved Shani, Shani gave him a blessing. That whoever has graha, whoever I impact negatively in life, so if I have Shani graha and I pray to Hanumanji, then the impact cannot be reduced, but how you receive the impact will be different. You understand? Just like I've been saying yesterday and the other day, we cannot erase our fate, we cannot rewrite our destiny. We can't do that. It is written in our books, it is something we cannot escape. What we can do is we can prepare for it. So today, let me give you an example. I was playing golf today. Today was our golf tournament. Full day of golf. So I know it's going to be a hot day. I can't tell the sun to stop being hot. Vishnu? Can you tell the sun to stop being hot? You can't. So what do you have to do to prepare for the heat of the sun? Wear what? Wear a hat. I wore my golf hat. And what else you have to do to prepare for the heat of the sun to start? Wear sunscreen. Very good. And dress appropriately. So you can't stop the sun from shining, but you can control how you dress for the sun, how you react to the sun. So we can't control grahas, that's already happened. Punarjanma ka karma is already gone. Past karmas have already been done. Prarabdha karma is done. What we can do is we can prepare ourselves for the karmas we are going to reach. And since we don't know what it is, then we have to charge ourselves up. How do we do that? By coming here and by sitting here in prayers and in puja. Because we can't change time. Do you think that anybody here think that anything occurs before time? Anything occurs before time? Does anything occurs after time? It's time? No. Okay. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
कलादुत्पत्यते सर्वं कलादेव विपत्यते न कालनिरपेक्षं हि क्वचित् कच्चित् विद्यते ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय बोलो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय न एष भगवान् काला कस्य वा वश्यवर्ययम् न एवास्य वशो नास्यात् कथोथै तदक्षिणः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय बोलो ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय. Is there anyone that believes that anything occurred before time or after time? When sickness gets to us, let's say Lord Shani hits our lives and we're going through some long-term graha, we are not, whatever it is, right? You're not seeing your way, you're praying and all these kind of things, but you're not seeing your way. What happens? Nothing. I am glad a few young people are here. A lot of people are online as well. Please listen to this. Kala tutpatyate sarvam kala deva vipatyate. Kala means what? What does kala mean? Govinda? And? Huh? Dark? And? Okay. Dark and black is the same thing. So kala means time. Kala means dark. What else kala means? Death. What else? Huh? Okay, good. So kala dutpatyate sarvam. In this case, it means time. The Lord is saying in the Mahashiv Puran that all things in this world grow at the appropriate time and they get destroyed in due time. Nothing happens beyond time. So, if you plant something, and you may plant the same thing the same time, your friend may plant the same thing the same time, your friend cucumber or bhaji may grow faster than yours may not grow just like theirs. It doesn't mean that your friend have light hand or God bless them more than you. It doesn't mean anything like that. It means their bhaji or their cucumber grew when it is supposed to grow. But have we two planted at the same time? We planted at the same time. What happened there, Aditya? Both bhaji, you know bhaji, right? Both bhaji plant the same time. That one is growing bigger than this one. What happened there? Right? Now maybe they got better manure, sunshine, whatever that. The time for that one is to grow. The time for this one is not to grow as yet. That is the reality. The challenge in bringing this now to society, the challenges in society is that today young people have to realize that you should not force yourself to grow up. Do you all understand? Don't force yourself to grow up. One day you will, happened to me, happened to every young boy and girl that were out there. When you are a teenager, you look at a boy in their mid-20s and you want to become like that. You want to wear what they're wearing. You want to comb their hair as they're combing it, right? And you hurry to become a grown-up, only to become a grown-up and then regret that you want to become a youth again, right? Enjoy your youth. This life that you have right now, your youthful days, is something that you must enjoy. Enjoy being a child. Enjoy being a teenager. Enjoy being whatever below 13 is called.
preteen. Because when you become a protein, right? You don't know what a protein there, Vishnu? Protein, you know protein? What's protein? Okay, you're being smart now, right? Enjoy your teenager years. Do not want to become like the grown-ups because your time will come. Kala dutpatate sarvam kala deva vipadyate. All things grow at the appropriate time. You all will grow up at the appropriate time, and then you will cease to grow at the appropriate time. Right? Nothing happens before time. Who says this? The Lord of time. Kaesha bhagavan kala kasyava vasyavartyayam ka evasya vashona syat kathaitam dutakshanaha. Who is the Lord of time? That is Shiva. To whom is he subservient to? He says that he is the Lord of time. When the entire universe is absorbed at the time of dissolution, a new one will be created, but that only happens when it is supposed to happen. Right? And another verse saying, Yo yuva, yo means a person, yo yuva means a young person, bhavet vriddho, a young person, a person who is young today, he becomes old tomorrow. The strong person becomes weaker. A rich man can become a pauper, and a pauper a rich person. The movement of times are quite astonishing. Kalas chitra gatir duja, nabhijatyam naveshilam navalam cha nainunaham. For the accomplishment of a task, the race, humility and excellence cannot be enough. Time is a regulator of everything. Nakalatoyam mriyate jayate nakalata pushti magrayana tupeti nakalananta sukhinam dukkhitam va nakalikam vastu samasti kitchitaha. Do you believe in untimely death? Anybody? You believe in untimely death? Have you ever heard that though? Have you ever, he died so early? I must have said that a lot of times. He died so young. He died so young is fine. Untimely death. Nakalato yam mriyate jayate. No one dies or is born untimely. There is no such thing as untimely death. And there is no such thing as untimely birth as well. If you're born, if all the preemies who were born 6, 7 month, 8 month, whatever it is. By the way, last night I turned a grandfather again. One of my goddaughters had a beautiful girl baby. We have to find a name for her now. Congratulations to Ashmini. She's given birth to a beautiful girl daughter this morning. And a few weeks early, but that is the time when the baby was supposed to come. No one born is born before time. No one dies before time. Without time, no one becomes happy or painful untimely. Therefore, there is nothing comparable with Kala, with time. The cool breeze blows timely. The clouds pour rain in due time. The heat is subsided at the appropriate time. Thus, Kala, or time, is always successful. Kalascha sarvascha bhavasya hetu kalena sasyani bhavanti nityam kalena sasyani kalam prayanti kalena sanjivati jivaloka. Kala is, or time is the cause of birth of all. The crops grow in time, harvesting is done in time, living beings live up to their own time. No one is beyond that. I think we all get the message now, so I'll put this away. The point is here is that all of you, please understand, you will grow up when you have to grow up, and
And that is the rule of life. Don't try to become a force ripe. I think all of you know what a force ripe is. Nikhil, you know what a force ripe is? You know what a force ripe is? Force ripe is a Guyanese term. It's like when a boy is trying to behave like a man. Is force ripe? It's like when you're trying to act above your age. You're young, but you're trying to behave like a grown-up, right? In terms of your looks and all this kind of play force, right? Isabella, you ever heard about that? All right. So Devika, we got to do some Guyanese teachings there. Their grandma does that. Well, think about the mango. You know what's a force-ripe mango? A force-ripe mango, think about a green mango, right? That wants to become ripe. But it becomes ripe at the stage when it is green. It means it doesn't taste good. It is not even good to look at. Force-ripe mango, you must eat one. It's very bad to taste. You know, and sometimes if you buy an avocado and you want to really eat the avocado, you know, and you really want to eat the avocado and you're not satisfied that the avocado is green, so what you do, you squeeze it. It's like, why are you not ripe? You're trying to actually tell it it's supposed to be ripe because you want to eat it. And you're squeezing it like this. And you're like, why are you not ripe? And then suddenly it's soft. And then you're satisfied that it is soft. And then when you eat it, it is green. So that's the message I'm trying to give you here today. So nothing happens before time, nothing happens after time. Why are we saying this? Today is Saturday, and it's the day of Shani, and Hanumanji was blessed that anyone who suffers this graha must pray to Hanumanji, and then we will be able to not take away your graha, but you'll be able to deal with it in a more mature way of life. Hanumanji is always there to help. Once in the Ramayan, in Sundarkand, which is, I think you know, the most beautiful chapter of the Ramayana, Hanumanji meets Shraavan, and Hanumanji make a plea with Shraavan. He makes a plea with Shraavan. A good devotee or a good person always encourage each other to do good things. When you meet people, you always encourage them to do good things. So he meets Shraavan, and Shraavan, of course, we all know who Shraavan was. Shraavan stole who? Who did Shraavan steal? Divya, I didn't ask you anything yet for the evening. You think you're escaping? Who did Shraavan steal? Huh? I can't hear you. Mother Sita. Very good. So he stole Mother Sita. And now Hanumanji visits him. And then Hanumanji says to Shraavan, बिनती करहूँ जोरी कर रावण सुनहु मान तजी मोर सिखावन राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम देखहूँ तुम निज कुलहि बिचारी देखहूँ तुम निज कुलहि बिचारी भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम ओ जाके दर अति काल तेराई जाके दर अति काल तेराई जो सुर असुर चराचर खाई राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम ओ तासों पयरु कबहु नज कीजे तासों पयरु कबहु नहीं कीजे मोरे कहे जान की दीजे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हो राम चरण
कौशल राजु तुम करहु राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम ऋषि पुलिस जसु विमल मयंका ऋषि पुलस्ती जसु विमल मयंका तेहि ससि मौजनि होहि कलंका राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम ओ राम नाम बिनु गिरा न सोहा राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखो विचार त्यागी मद मोहा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बसनहीन नहीं सोह सुरारी बसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित पर नारी राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम ओ राम सिया राम जय जय राम 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 ओ सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम Hey Ravan, Hanumanji is speaking to Ravan. Ravanji, you got to listen because I'm going to ask you questions afterwards. Ravan is listening to Hanumanji and Hanumanji clasped his hands. Hey Ravan, हे नाथ हे मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ तुम अहंकार त्याग कर मेरी सिखावन सुनो. Now I implore you with folded hands. Clasp his hands and he's not praying to Ravan, but he's imploring. He's begging him. Give up all your haughtiness. Give up all your anger and listen to me. Have some regard for your lineage and view things in that perspective. Give up the delusion that you're in and worship Ram, who dispels the darkness and the fear of his worshippers. That's the one advice he gives. Clasp his hands and he says, give up. He says to give up. Tyag means to give up. Secondly, he says, now that you have given up, or the first stage is to give up. Second stage is to fight not. Don't fight. Jaake dar atikal derai josur asur charachar. Fight not against him who is a source of terror to death himself. Don't fight against Rava. Give up, Mother Janki. Then he says, Pranatapala Ragunagyaka, that install the image of Ram's lotus feet in your heart. And when you do that, Ravan, he will save you and you will enjoy uninterrupted sovereignty of Lanka. I have to ask you questions now. Do you ever advise people to give up bad habits? Do you do that? Ever advise people to give up bad habits? You should, right? If you care for somebody, genuinely, if you care for somebody, we have to be careful these days though, because when you try to be helpful to people and tell them or advise them, you're sensitive about it and all that, and tell them to give up bad habits, they may think that you're better than them.
That's in most cases. I've been asked that many questions. Why do you think you're better than me? And I'm like, I don't think that at all, that I'm better than anybody. I think that we are all capable, though, of doing something good. And one of the things we can do is give good advices to people. If you really care for somebody, a friend, a family, a colleague, I think we should be brave enough to give them good advice. And one of the good advices we should do is ask them to give up bad habits. Now, bad habits is very subjective. What are bad habits? That's the other thing. You got to be careful now. You can't cross it. What are bad habits? Right? Eating at a bad time, eating unhealthy food, drinking unhealthy things, drinking intoxicating things irresponsibly. What is bad for people and what is bad for you is a whole different thing. So we're dealing with a whole bunch of sensitivity issues here. And you have to be prepared that when you give people an advice, or when you give people, or when you ask them to give up certain things, that the chances are very high that they're not going to speak to you back again. I'm being very honest with you. Or maybe you're very different, but that's what they do to me. Anyways, you tell people to live good, they don't talk back to you. They think that you are high and mighty, and they are nothing. That is not the intent of anybody who gives good advice to people. The Hanumanji here is giving advice to Ravan, not because he thinks that he's better than Ravan. In nowhere here, Hanumanji says, I am better than you and you're a demon. And he says, no, no, no. I am asking you, Ravan, with folded hands to give up your haughtiness and have some regard for your lineage. You know, you have to think about it. I always tell you guys, you kids this. When I was younger, even now, my parents, died many, many years ago, over 20 years ago. But even now, if I do something, I think about if they were alive, how it will impact them, right? All of you may think that your parents have no emotions and they're grown and they're big people, but you have to think about how they will think when you do something. When you do something good. I was always very proud, to go and tell my parents or for them to see what I've done. And when I made mistakes, I felt very horrible. Because as children, we will all make mistakes. Knowingly or unknowingly, you're all going to make mistakes. So we have to deal with it. But it's important. Give advices to people who you care about, right? It may not work all the time for you, but at least you have done your part if you truly care about someone. Fight not against him who is the source of terror, right? This can be you can interpret this literally. You can tell people don't fight with anybody and things like that. But I think our aim here is to be the Hanuman. All of us have to be the Hanuman. Who is the Hanuman? The Hanuman is the Ram Bhakta, the servant of Ram or the messenger of Ram. We have to take the name of Ram Bhagwan. Here's the advice he gives. Ram charan pankaj ur dharahu lanka achal raj tumh karahu. कि हे रावण तुम श्री राम जी के चरण कमलों में को अपने हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो. Install the image of God in your heart and enjoy the uninterrupted sovereignty of Lanka. So Hanumanji is telling Raman, put the install the image of Ram in your heart, and if you do that, you will not die. You will enjoy this Lanka. He will spare you. But the minute you go against him, you go against Dharma. God is very old-fashioned today. You almost know that. It seems though when we're talking about God or temple or spirituality or religious, it seems very old. Oh, you're talking about God, right? It's like, why are you talking about that? We're at an event. Why are you talking about that? We can talk about everything else, but we fail to talk about the space that is supposed to elevate us. Don't fail to talk about it. I think that you may not want to bring, if it is not appropriate, depending on where you are, to bring God into it, at least talk behaviors, right?
How do you cope? What do you do to relax? What do you do on a Saturday afternoon during Shraavan? Talk about your experience here. Speech is charmless without the name of Ram. And we as children, all of you as children, and those listening, if adults, you must understand this, that God, the name of Ram is not, you don't have to understand the meaning of the name. You don't have to understand the meaning of the name. Adi Shankaracharya was once asked, Adi Shankaracharya is a philosopher. So he was once asked that if the name of God is so powerful, can you tell me the meaning of the name of God? Since you enjoy, because when Adi Shankaracharya chants Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam, all he sings is Govinda, 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 Govinda. He chants the name of God. So people are confused. They say, what is the name? What is the meaning of this name? Why you do so like it? You know what he says? He says, wait a minute. Early morning, when you go outside and you sit on your chair and you hear the chirping of the birds. You hear the chirping of the birds. What do? You sit back and you enjoy the chirping of the birds. For a lot of people, it's relaxation. Today, people buy machines and they turn them up to chirp like birds. They enjoy relaxing, right? You hear the chirping of the birds or the cricket. A cricket not so much, but chirping of the birds. And when you hear it, you enjoy, you relax. Maybe you have a coffee, enjoying, or a tea, whatever you drink. And you're enjoying your coffee and the birds are chirping. Do you know the meaning of their chirp? Do you understand what they're saying to Sarah? You don't. You don't understand what one thing they're saying. And all of them have different, it's like an orchestra, One of them go choo-choo-choo, one go choo-choo, one go choo-choo. But they all have this little way of organizing themselves together. And it sounds like a huge orchestra planned to give this beautiful descent of music into the ears of human beings. We don't understand one thing they're saying, but we enjoy what they're saying, what they're tweeting. Right? We enjoy what the chirping is. The same Adi Shankaracharya says is with God's name. When we chant a mantra, today the West is diving deep into the meaning of Om. What does Om mean? People come here and ask, what is Om? What is the meaning of Om? I said, frankly, nobody knows the meaning of Om. Akara, Ukara, and Makara. A-uma, Om. There's a meaning to it that the Shiv Puran gives you. There's a meaning to it that the texts give you. But understand that meaning is perception. Meaning is perception. When you associate a meaning to a mantra, it's a perception. But when you enjoy the sound of it, that is what matters the most. The name of Ram Bhagwan, Hanumanji says. The name of Ram Bhagwan, don't worry about the meaning, Ravan. Just install the name of the Lord in your heart. Ram Naam Binu Giran Nasoha. Dekho Vichar Tyag Mad Moha. Speech is charmless without the name of Ram. Ponder and see yourself, casting aside the arrogance and the infatuation. And so he advised Ravan this. He continues, long advice he gave Ravan. He tells Ravan, listen, tenhead, give up everything. The wealth and lordship of a man who is hostile to Ram, eventually leave him. Everything will run away from us when we are hostile towards God. Sometimes we ask ourselves, why is my peace leaving me? Why is my happiness running away from me? Why is my comfort running away from me? Why am I running away from me? Ramayan says, Rama vimukh sampatti prabhutai jai rahai pai binu pai. That wealth, happiness, comfort, peace will all run away from a human being
when they have turned hostile towards God, when they turn away from Bhagwan, right? This brings an important point I want to talk about this evening as well, before we wrap up, and that is, who or what do you turn to in moments of losses and sadness? Now, many parts of the world, even in this part of the world and in our community, when sadness and sorrows step into a person's life, they turn towards drugs and alcohol. This is the reality. They turn to drugs and alcohol when sadness step in their life. Many as well, when sadness and sorrows step in their life, they turn towards God. Now, in what case would one person turn towards drugs and alcohol and one person will turn towards God? Right? What will determine, what is the determinating factor to say you're going to turn towards drugs and alcohol, you're going to turn towards God? What is going to determine that? What will determine that is what you have found comfort in pre-sorrows and pre-issues. So prior to you having sorrows and issues and problems and all that, right? If you found comfort in drugs and alcohol, then when sorrows and troubles come, you will go back to find comfort there. But if pre-sorrows and pre-challenges and pre-losses, you found comfort in God, when sorrows and problems come, you will fall at the feet of God for help. That is why it is so important to have God on our side. Because if we don't have God on our side, remember this, Shraavan rati virati raghurai. This happened in our scriptures over and over. When Bibhishan at one point in the Ramayan saw the army of Shraavan rati, and when he saw the army of Shraavan, and Shraavan had thousands and thousands of chariots, he looked at Ram, virati raghurai. Ram did not have, he had bears and monkeys, he did not have a single chariot. Dekhi Vibhishan bhayau abhagi. Vibhishan fell into deep sorrows because he says, how are we going to win? We don't have a single chariot, but Shraavan has so many chariots. He forgot that whoever is on the side of Ram, they are going to win. In the Mahabharata as well, Arjun's army could not match the Kauravas' army. But Arjuna had Bhagwan Shri Krishna by his side. Whoever or whichever one of us have God by our side, no matter what happens in your life, you may be at a disadvantage in many, many cases, but you will be victorious. So what happens? This advice was given to Shraavan, and you know what Shraavan said at the end? Hare, look what we have here. Bola bihis maha abhimani mila hamahi kapi gur ban gyani. To bhi waha abhimani Shraavan bahut haskar. Shraavan laughed and says, Bola ki yame yaha banar bara gyani guru mila. Areva, this monkey has become a big guru. He's giving me teachings. Are, let's punish him. Death is going to be your friend now. Death is hanging over your head. We're going to kill the monkey. Because that is what happens. Somebody's giving you advice. The first thing you tell them, oh, so you turn me guru now. You turn God now. You've turned my savior now. Very simple. Thing happened since Treta Yuga. Anyways, to wrap it up, they said that instead of killing him, we're going to make fun of him. The people who are trying to help us in life, we're going to make fun of them. We're going to call them names. We're going to do things to them. We're going to make them feel that they're nothing. So they try to tie fire on the tail of Hanumanji. And there's another old guy, and he's saying, when you light fire for someone else, it will burn you. Oh, no. The saying is, when you dig a pit for someone else, who falling? Me? You? Me?
Whoever dig the pit for someone else, they will fall inside. Right? So it means, don't do bad things for people. Otherwise, the bad thing is going to come back and hurt you severely. And that's what happened to them. They light fire from somebody, and the fire came back and burned the entire Lanka. Bole Pavana Sutta Hanuman ki Jai, Siya Bhaj Ramachandra ki Jai. So this evening you see Hanumanji is fetching the mountain. Hanumanji is very glittery. That mountain, we don't have that form. We have, when we selected our murti, I chose to, I keep saying we and sometimes I make a decision, but anyways, so we chose to bring Hanumanji in the darshan form. Here is a darshan form, darshan Hanuman. You see him there? He holds his gada, he's giving darshan to everybody who came. The little children sometimes come and they say, Hanumanji is giving us 5, and they sometimes jump and give him 5. But I don't know. But this is darshan Hanumanji. Just like Bhagwan Vishnu in Kanchipuram, he's called Vardaraj Perumal. His right hand is open to give blessings. But we have this Hanumanji, he is carrying mountain. And the mountain he's carrying has a message. That mountain he's carrying is our mountain, right? Our mountain, not his mountain. Hanumanji has no problems in this whole world. He can go on top of a tree and eat mango whole day and he's fine. He survived, he's fine. But he's fighting battles for Bhagwan. That mountain that he's carrying is our mountain, which means that you shouldn't be carrying mountains in your life. You know what mountains are, children? Mountain. We never ever, incidentally, we never ever describe our happiness as a mountain of happiness. We always say, I have a mountain of Aditya? Mountain of Anaya? Problems, exactly. But we never say we have a mountain of happiness. This is us. We have a mountain of problems. I have a mountain to climb. Well, he is flying away with your mountain. So you have to be free and you have to be happy. I want to thank all of you for coming this evening. Please remember, you're never alone in any struggle in this life. God is always with you. We're always with you. And as long as you have each other and God, we'll all be fine. Bole Pavana Sutta Hanuman ki Jai. Bolo Sada Jaykar Pavan Sut Mahabali ki. Bole Pavana Sutta Hanuman ki Jai. Bolo Sada Jaykar Pavan Sut Mahabali ki. 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 केसरी नंदन बलिधारी की. केसरी नंदन बलिधारी की. मारुति नंदन उपकारी की. मारुति नंदन उपकारी की. और करे सेवा हाथ पवन सुत महाबली की. बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की. ओ बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की. बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की. श्री राम.
अपने कपीश को मन में बसा दे, अपने कपीश को मन में बसा दे, उपकार पूजन दर पे आके, कर पूजन दर पे आके, और शरण सुबह शाम पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की। संकट मोचन नाम जो ध्यावे, संकट मोचन नाम जो ध्यावे, संकट उसके पास न आवे, संकट उसके पास न आवे, और महिमाए दिन रात पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की। बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की। पवन सुत महाबली, पवन सुत महाबली की। पवन सुत, बोले पवन सुत हनुमान की जय। If anybody bought prasad or want to just come and take darshan of the Lord, you can do that now. I'll do that. We'll have a bhajan. बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। 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 बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूत जता में गंगाधारी, जूत जता में गंगाधारी,
inviting everybody tomorrow. Anyways, so inviting everyone tomorrow. Of course, every day we have service. Monday evening, we will do Shraavan Somar Puja. Tomorrow Pradosh starts, but we will do the 108 Shank Puja on Monday. So that will be done Monday evening, just to give everybody a chance to participate and so on. So we'll do that on Monday. Tomorrow at 12:15, I would like to invite all of you to the temple. Every year what we do, this is a charity. It is run by, Charity Standards of Canada, and we have certain rules to follow for charities. So one of that is we are very transparent with our finances at the temple. So what we do annually, we invite people, we invite the public, anybody who wants to come. Tomorrow we'll be reviewing our 2022 financials to show you how much we spend, how much we collected, that kind of thing. Pretty open. There is no special invite. Everybody's invited to come. It's a very transparent process. We'll present to you in a nice professional PowerPoint slides. Here's what we did. Here's our events. Here's what we did. Here's the whole works. Takes about half hour, depends, 40 minutes or so to do. So 12:15, that is happening tomorrow in our boardroom upstairs. The public is invited. We don't want this to be a temple where people guess or try to figure out how the temple is run. I mean, it is a public space. We don't come out and tell you every time that, here is Ram Navami, we made $2,000 or the whatever it is. Because those are not fundraising things. We put it on paper and we present it to people. Because I think an organization that is a charity, it should be very transparent. We've always been like that. So tomorrow, 12:15, everybody's invited. You can come up in our boardroom. We are going to send out a Zoom link to a few people so that who are living out of the country, for them to come, for them to participate as well. Because we have a lot of donors and well-wishers who are not in the country, so we're inviting them to participate. Everybody's invited tomorrow, 12:15. Thank you. Om yani kani cha papani janmantar kritani cha tani sarvani nashyantu pradakshinam pade pade. Om Jai Shiva Omkara Swami Hare Shiva Omkara Jai Shiva Omkara Swami Hare Shiva Omkara Brahma Vishnu Sada Shiva Brahma Vishnu Sada Shiva Dhage dhara Om Jai Shiva Omkara Om Hare 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 Mahadev Ekanan Chaturanan Panchanan Raje Swami Panchanan Raje Hansasan Garurasan Hansasan Garurasan Vishvahan Saji Om Jai Shiva Omkara Om Hare 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 Mahadev Do bhuj char chatur bhuj das bhuj te sohe Swami das bhuj te sohe तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता
महादेव। अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला रे स्वामी रुद्रमाला रे। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे बाल शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसार्थि हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। बोलिए भवानी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्यवर रामचंद्र भगवान की, सूर्यादि समस्त नवग्रह देवताओं के, पवन सुत हनुमान जी महाराज के, विघ्न विनायक श्री गणपति महाराज के, लक्ष्मी मैया के, शरणेश्वरी माता दुर्गा के, सरस्वती मैया के, सत्यनारायण भगवान के, सूर्य नारायण भगवान की, नवदुर्गा भवानी की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, संध्या सैन मारती की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो।
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ सुशान्तिर्भवतु।